Attendance. क्लास में डांस कर देता था तो मैंने ना ऐसा वॉशरूम जा रहा था तो तेरे किसके भाई को फोटो डांस कर रहा था वॉशरूम जा रहा था क्या क्या
Oh. That's okay. Very so brown. Karen, one more time, one more time. Karen, full concept is after. No, right? Huh? नहीं आपने उस समय ना किसी को डाटा ना उसका आया उसके साथ मेरा आईडी किधर गया बोलेगा कौन तो मतलब कौन सर प्लास्टिक हाँ वही उसको वेटो का गाइड कर लो हाय वो मेरे को और डाल में से तेरी शक्ल देखो ओ पर मैंने तो तेरा आईडी कार्ड देखा भी नहीं तेरी बहन से स्कैन करके bro please stop doing that he says you are accident bro bro समझ कुछ क्या he say you निकाल लड़कियां बैठी नहीं करनी खराब रखा है यार उधर उधर उसको वही मैजिक कर दी है तो वेरी हो गई पहले व्हाट आर यू डूइंग bro I'm skiing no puppy अरे क्वेश्चन को टेलीफोन हाँ अब इसमें लाइक वाला कमेंट किया वो हो गई डिस्कंटिन्यूटी no it's muted हम लोग को ना ये सुना तुम बोतल पीटे हमारे वो नहीं चलो गया एबी बनेगा सब भूल जाएंगे बनेगा क्या हुआ इसके पास क्या करोगे क्या है बैगी हो गए अरे ढूंढ रहा ना यार वो दिमाग का पहले सर गलती से हो गया सर गलती से हो गया थोड़ा असम पहले पहले इतना पटेल तो खेती करना you don't really use it ये करता है ये ले लिया क्या इसलिए अभी ऐसे जगह लेके चलेंगे sit down okay let me know if somebody is trying to get online okay we are expecting one more student एक last time कर रहे थे जो हम लोग
This years. Where is one of the same thing? एक और है ना जो 11%. Okay, so where did we stop last lecture? Complete हो गया? क्या करना है आज? देख लो कौन सा नंबर पे लिया था लास्ट? सर शुरू कर दिया हमारे साथ से स्कूल में हमारे साथ से तो क्या पता नहीं बोला आपको स्टार्ट करते हैं वेगल सारे हो गए ना यस आपको 12th वाला न्यूमेरिकल तो पेज 51 से है उसका आपको सी वाला ढूंढना था बस जैसे सी करते हैं ना ठीक है वो टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ बॉल क्या होगा उसमें टोटल टाइम में अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी दोनों का टाइम निकालो ठीक है कैसे होगा So इसका U और इसका V कितना होगा 0. इनिशियल वेलोसिटी हमने पार्ट ए में निकाला था अब ये पार्ट सी है पार्ट ए में हमने इनिशियल वेलोसिटी कितना निकाला था 20 मीटर पर सेकंड ठीक है और जी कितना है हमारा जी हमको लेना है 10 मीटर पर सेकंड तो हमको टाइम निकालना है सो टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी क्या होगा What is time for upward journey? It is time for upward. तो क्या हो जाएगा V is equal to 0 ठीक है टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी कितना है हमारा V 0 है U हमने 20 निकाला था G कितना लेंगे G is opposite to the motion right तो G क्या हो जाएगा -10 ठीक है ना for upward journey the sign of G will be negative so therefore tan C is equal to T is equal to 2 seconds ठीक है तो अपवर्ड जर्नी के लिए जितना टाइम लगेगा टाइम तो नीचे आने के लिए लगेगा since time for is equal time for total time okay so whenever any object is thrown up whatever time it takes to reach the top same time it takes to come down तो टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा अंडरस्टूड क्यों सेम टाइम क्यों लगता है क्योंकि यहाँ पे जितना ग्रेविटी अपोज कर रहा है उतना ही यहाँ पे वो एक्सिलरेट कर रहा है
तो ये सिमेट्रिक होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन इज सिमेट्रिक, ठीक है इसके लिए। Okay, now we'll start main chapter, pressure. So you're saying this is coming for only chapter 4, right? Till chapter 4. Till chapter 4 is stuff, right? Or second, third? That's what I'm saying. In chapter 4, there are two parts, pressure and atmospheric pressure. So that full chapter is coming. Yes, sir. No, I'm just. When is the exam? When is the exam? We'll be able to do that. Okay, you're still writing or I just done? So let us start. Okay, so the first topic in this chapter is thrust. Let us understand what is thrust. Force acting on the body is called as force. So it is the normal force. So listen. Like when I keep any object, okay, so it is exerting thrust because its weight is acting perpendicular to this surface. Okay, so what is thrust? Perpendicular force on the surface. Good. I'm not asking question, right? I'll ask question and answer. So what is thrust? It is the perpendicular force acting on a surface. Okay. So it is perpendicular or normal force acting on the surface. So what is example? Weight of any body. Weight of any body exerts thrust on the surface. Okay. So like if you keep any like this duster, then it's so what is the thrust caused by duster? The weight of the dust. Thrust is the weight of the object. Is that clear? Now let's define what is pressure. So unit of thrust will be unit of thrust will be unit of force. Newton. So thrust is nothing but force only. Okay. But what kind of force? Downward force. Okay. So normal. Any normal force acting on the surface is called thrust. So solid को जब भी रखेंगे, it will always exert thrust. Now let us define pressure. It is defined as thrust exerted for unit surface area.
plus exerted per unit surface. ठीक है, मतलब प्रेशर क्या हो गया? Okay, और P is equal to F by, ठीक है. So what will be unit of pressure? Pressure, unit of pressure is unit of force divided by unit of area. So Newton per meter square. It is also called as Pascal and written as so there are some other unit of pressure, other units. Bar. So there is a relation between bar and Pascal. So what is bar? So it is written as bar. One bar. One bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. One bar is 10 raised to 5 Pascal. Huh? R is larger than Pascal. Yes. Pascal is Smaller than bar. Pascal is 1 Newton meter square. 1 Newton per meter square. This is 10 raised to 5 Newton per meter square. Understood? Wow. Shake of hands for understanding something. Then if it is a millibar, then what is a millibar? Millibar will be Smaller than Pascal. 10 raised to 2 Pascal. What will be a millibar? 10 raised to 2 Pascal. Divided by 1000. Milli means 10 raised to minus 3. So millibar will be 10 raised to 2 Pascal. Okay? All right. So what are the factors that affect pressure? Thrust and area. Pressure depends on thrust and area. So if thrust is acting on a larger area, pressure will be small. Okay? So let us write down here. So factors that affect pressure. So P is directly proportional to F, and P is inversely proportional to area. Okay. So how to compare? So you take one quantity constant. So for a given thrust, P will vary as per area, right?
He will vary as per area. For example, if you take the nail, so nail has pointed edge. The edge of the nail is pointed. So when you hammer it, it creates a lot of pressure. It's easy for the nail to penetrate. Because of small area, it will generate lot of pressure. Because all the pressure is acting upon a small point. Yes. Let's Let us say it was blunt. Okay. If it was blunt, more thrust will be required to drive it. Understood? Now, the other example. Straps of bag are broader. Right? Look at the straps of the bag. They are made broader. If it was thin, Like a room. it will exert more pressure. So it will begin to hurt your shoulders. Okay? So that's why it is made broader. So by making broader, what are you doing? You are increasing your area. More area, less pressure. Because load, bag has whatever load it has. Load is thrust, weight. Weight of the bag is thrust. But now, if you are hanging it on a broader strap, you won't feel that much because the load is divided over a larger area. समझ आ गया? So these are the applications of the factors which will affect pressure. All right. These are the use cases. Next is, in this chapter, we have to now study pressure of fluids. So fluid, what is a fluid? Next topic is pressure in fluids. This is it. I think we need it, right? Yes. Which one is this? This one? Yes. So middle one open. How to relieve you? Headache, This. हाँ वही middle वाला open का वो pitch के प्रश्न आता है. वो भी आवाज करेगा भी. उतना नहीं करता है. ये generator से अभी. So pressure in fluids. So first let us understand what is fluid. The fluid is any liquid. I'll ask, give you opportunity now. First listen. Fluids are substances that can flow. That's why fluid. Okay. These are substances that can flow. So, is solid flowing? No. No. But if you drop liquid, will it flow? Yes. Liquid will, like if you pour a water on the table, it will flow. Same is the situation with gas. So, liquid and gas both are called as fluid because they can both flow. Wind also blows, right? So, these are substances that can flow, such as liquid and gas. Okay. So now we are going to study how the pressure act in case of fluids. It is different than the pressure in case of solid. The fluid, the pressure is applied on the surface. In solid,
pressure is applied only at the surface in contact, not sideways. Yes. But in case of fluid, it is sideways also. Because fluid takes the shape of the container which it is put in. No, because it flows. That's the reason that it takes the shape of The the reason container. is the intermolecular forces are less. That's why. Okay, so the forces are not strong enough to hold the liquid and gas molecules together. But in solid, the forces are very strong. So it has a fixed shape. Whereas liquid and gas does not have a fixed shape. Right? Now gas, liquid has a fixed volume, but not fixed shape. Right? Whereas gas has nothing. It has neither fixed volume nor does it has fixed shape. Liquid at least has fixed volume. So solid has everything fixed. The shape and volume, everything is fixed. Is that clear? Yes. Now, so let us see the nature of pressure in fluids. So let us understand it with the help of an example. Take a container. So we'll take the example of liquid because it is easy to understand. As you can see the liquid, right? Here. So imagine a liquid is filled till a certain height. Now consider these 3 points. You have this is the free surface, point 1. Okay. Then you have point 2 here. Then you have point 3 at the same level. Then you have point 4. As you go from point 1 to point 4, tell me, what about pressure? Pressure will increase. Pressure increases with depth. Yes. Okay. So the relation between pressure will be Force. so what is where is maximum pressure? P4. P4. Where is maximum pressure between the 4 points? P4. Right? So why it is so? Because That we will see. mass. Because what is the formula for pressure? Pressure is F upon A. Okay. So at P2, we have pressure due to, thrust due to all the mass of water above this point. Okay. And we also have atmospheric pressure here. Above water, here, atmospheric air cost. So we are all subjected to atmospheric pressure. Air is gas, which is fluid. Right. So everybody on Earth is subjected to atmospheric pressure. Earth is surrounded by atmosphere. Correct. So anybody standing is actually standing in the tunnel of air. And this runs almost 300 to 400 kilometers. So above us, there is a 400-kilometer of air column. Okay? So we are actually experiencing atmospheric pressure all the time. Yes. So atmospheric pressure में क्या होता है? An area of 1 centimeter square receives air thrust of 1 kgf. 1 centimeter surface
area on Earth experiences 1 kgf of thrust due to atmosphere. Okay, so this is how much? This is roughly 10 Newton. To some. So what is 1 meter square? That is, it is 10 raised to minus 4 meters square. Corresponds to a thrust of 10 Newton. 10 Newton कितना kg G से मल्टीप्लाई करोगे ना kgf तो न्यूटन में क्या होता है G मल्टीप्लाई करो G is 10 तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा therefore pressure is equal to what 10 Newton upon 10 raised to minus 4 meter square ये तो होगा what is atmospheric pressure it is denoted by P0 how much is atmospheric pressure we are experiencing this so this is roughly equal to 10 raised to minus 5 Newton per meter square. 10 raised to plus 5. So 1 lakh Newton per meter square, meaning 1 bar. What is the atmospheric pressure? 1 bar. So everybody is subjected to this atmospheric pressure. Sir, so 1 by 1 meter table is experiencing a force of 1 bar. Yes. Which is 10 cars. Hmm? Which is approximately weight of 10 cars. What is the weight of 1 car? 10-20 tons. At least 2 tons, which is 2000 kgs. Okay. So you are experiencing 1 lakh Newton of force every meter square. And what is the body area? The surface area of the body is About 2 meters. 10 meters. 2 meters square. Like 1 meter front, 1 meter back. If the skin is peeled and made like this, our entire surface area of the body will be roughly 2 meters square. Okay. So we are subjected to 1 lakh. 2 times this. 2 times this. Still, we are not squeezed. So imagine how much work the heart is doing. Surface area. Sir, So heart is pumping blood now. to increase the pressure in our body. 10 raised to 5 Newton. Can you imagine in terms of kg, how many kgs are kept on you? 10,000 kgs. Suppose somebody has kept 10,000 kgs on you. That weight is 1 lakh Newton. Into G करोगे ना? kgf हमारा कितना हुआ जो हम experience कर रहे हैं? That, but we don't feel it, right? Okay, we have got used to it. So heart is pumping blood. Blood is still so. The blood pressure. Have you heard about blood pressure? So the blood pressure inside our body is slightly more than 1 bar. That's how it is able to reach everything. You understand? So what I was trying to say is, the atmospheric pressure is this. So what is the pressure P2? This. Now what is the pressure at P1? Only the atmospheric pressure. But pressure at P2 is atmospheric pressure till here plus pressure due to additional water. क्योंकि pressure में क्या आ जाएगा? Water का weight आ जाएगा. What is F by A? F is nothing but mg upon A. So if you forget atmospheric pressure right now, so there will be pressure due to this column of water. So what is the pressure here? Weight of the water above this point divided by whatever is the area. We can't bear the pressure. How can somebody sleep in pressure? What is the pressure here? Weight of this water column divided by this area. Clear? So as you go down, we were
trying to understand that with depth, the pressure increases. Yes. But P2 and P3 are at the same depth. So pressure at P2 and P3 will be same. So if you go to P4, the depth is increasing further. So with depth, what is happening? Mass of the water above P4 will increase. That's how, as you go at higher depth, the pressure will increase. Is this understood? Huh? So we have observed pressure increases with depth. What else? Now we replace the liquid with a liquid of higher density. Say instead of water, now replace it with glycerin or honey. So its density is more than density of water. Yes. So obviously, now if you express mass in terms of density, mass is volume times density. So mass can be written as volume times density. Correct? क्योंकि density का formula क्या होता है? Mass upon volume. What is density? Mass upon volume. So mass is volume into density. तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको. Isn't it? So ये हो गया. Understood? So this results into laws of pressure. Okay. So first let us derive the formula for pressure in terms of depth and density. Okay. So देखो. Pressure due to liquid column. So consider we have a. So don't write that. You just see here. Consider you have a liquid in a container. Now consider an imaginary cylinder. What is this? This is an imaginary cylinder inside the liquid. Okay. So let's call this as PQRS. Now we want to find the pressure at the bottom of this cylinder. At RS. Right? So what is pressure at RS? So pressure at surface SR is equal to thrust at SR divided by area of SR. ये तो होगा. So thrust at SR is the, but thrust at SR is what? सर एक मिनट आगे पैनल का फोन आ रहा है तो मैं कॉल करने के लिए बोला हाँ ठीक. 12 मिनट मोबाइल Thrust at SR is equal to weight of the cylinder. yes. Imaginary cylinder. ठीक है. ये तुम्हारा imaginary cylinder. ठीक है. Because we want to find pressure at different points. और ये सिलेंडर का हाइट हमने क्या ले लिया? डेप्थ h. और इसका जो बॉटम एरिया है वो है a. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है सिलेंडर का? एरिया ऑफ द बेस इज a. So what is the weight of the imaginary cylinder? It is mass into g. और mass को हम कैसे लिख देंगे? Mass can be written in terms of volume and
Density. What is density? Let's say rho is the density of water. Okay. And volume can be written as area of cross section into H. So this is the thrust. Okay. So thrust कितना मिल गया हमको? AH rho G. So what is pressure then? Thrust upon area. So AH rho G divided by A. So A cancel हो जाएगा. So F वो ये मिल गया. Thrust हमारा F. Yes. प्रेशर कितना आ गया? F कितना था? AH rho G divided by A. यानी कितना आ गया? H rho. ये प्रेशर का डेफिनेशन है. प्रेशर का डेफिनेशन यूज करके हमको प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कॉलम कितना मिल रहा है? H rho G. गलती से हाथ मल गया. प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा फॉर ए लिक्विड कॉलम? प्रेशर H rho G. So pressure depends upon the depth of the liquid column and the density of the liquid column. G तो कांस्टेंट ही रहेगा. जहां पे हम प्रेशर देख रहे हैं for a given location G is always constant. ठीक है, समझ आ गया? तो अगर डेप्थ चेंज हो रहा है और डेंसिटी चेंज हो रही है तो प्रेशर चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इससे हमारा क्या लॉ बनेगा? लॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर. सबसे पहले क्या है? प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ. जितना तुम लिक्विड में डीपर जाओगे उतना प्रेशर बढ़ते जाएंगे. ठीक है, दूसरा लॉ क्या बनेगा? प्रेशर इंक्रीजेस विद डेंसिटी. ठीक है, ठीक है. फिर थर्ड और क्या दिया है? प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. अभी तुम कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लो, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट निकालो, प्रेशर विल बी सेम बिकॉज इट इज एट द सेम डेप्थ. ठीक है, So that's why this table doesn't. That's why this table doesn't corrupt due to atmospheric pressure. atmospheric pressure also and it also depends on the strength of material. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी तो चाहिए. और दूसरा चीज क्या है? एक चीज और है इसमें, प्रेशर ना हर डायरेक्शन में लगता है फ्लूइड में. मतलब अब इस पॉइंट पे प्रेशर इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है और नीचे से भी लग रहा है उस पॉइंट. तभी तो तुम फ्लोट होते हो ना. व्हेन यू ट्राई टू एंटर इन द लिक्विड तुम्हारे ऊपर नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, थ्रस्ट लगता है ऊपर की डायरेक्शन, इसलिए तुम्हारा वेट कम हो जाता है लिक्विड. यू फील सो. पूल में अगर उतरने का कोशिश करोगे या कभी समुद्र में नहाने का ट्राई कर रहे हो, if you go underwater you will feel that your weight has become less. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, सॉलिड के जैसा नहीं है. ठीक है, सॉलिड में साइडवेज प्रेशर नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुमको साइडवेज अप डाउन हर तरफ से प्रेशर आता. मान लो यहाँ पे कोई एक स्विमर स्विम कर रहा है, ठीक है, तो इसको ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, इसलिए इट इज इजी टू स्विम इनसाइड द वाटर. हाँ,
ऊपर और नीचे का फोर्स ऊपर सेम है, मतलब स्मूथली फ्लो करे। इसलिए जो स्विमर्स होते हैं अंदर जाके बहुत दूर जाके निकलते हैं आराम से। पूरा बाहर ही कर रहा है तो उसको एफर्ट ज्यादा लगेगा, अंदर अंदर करेगा तो जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, बात समझ में आई? सो प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस अबाउट अ पॉइंट इन लिक्विड, इसलिए प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। मतलब लिक्विड के अंदर अगर ये पॉइंट लिया तो प्रेशर डाउनवर्ड काम नहीं कर रहा है जैसे सॉलिड के केस में था। यहाँ पे इधर भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है, हर तरफ लग रहा है। That's why pressure is a scalar quantity. It does not have fixed direction. Is that clear? Pressure is scalar quantity because it does not have a fixed direction. It acts in all directions. So read the laws of liquid pressure in your volume. Page 59, the bullet points in the end. Okay. So last 3 points. Pressure factors affecting pressure at a point in liquid, H rho G. Because वो formula हमने लिखा है. Then there are certain things on which pressure does not depend. So in this formula, do you have area? Huh? No. So pressure does not depend on the area. ठीक है? ठीक है? मतलब if this was a bigger container or smaller container, the container is now smaller. What will be pressure here? Let's say I am calling the pressure over here. Let's call pressure P5 and P5. P5 and P6. किधर pressure higher होगा? P6 Same depth है. पर जो एरिया कम हो गया प्रेशर Pressure depend on area in fluid. P6 equal P5. Area cancel हो जाता है. P6 equal P5. Yes. तो ये देखो, pressure inside a liquid does not depend on area of the surface on which it acts. Sir, but अगर same amount of liquid दोनों में रहे हो तो अरे वही तो बोल रहे हैं ना सर, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड रहे उससे फर्क नहीं है, तो प्रेशर सेम ही होगा। लेकिन अगर सेम अमाउंट नहीं रहे तो भी प्रेशर सेम होगा, अगर हाइट सेम है और डेंसिटी सेम। समझ में आया? तो इसके लिए देख, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द वेसल। इधर देखो, अगर हमने वेसल ऐसा ले लिया होता, टम्बलर ले लिया होता, तो भी ये सारे प्रेशर P5 इक्वल टू P6 इक्वल टू P7 होगा। क्यों? क्योंकि H सेम है, H सेम है और डेंसिटी भी सेम है। तो शेप, साइज, एरिया ऑफ द बेस पे मैटर नहीं करता है, प्रेशर सेम ही हुआ है। अगर मैंने ऐसा फ्लास्क ले लिया होता, और यहां तक वाटर है P8, तो ये सब सेम आने वाला। समझ आ गया? समझ आ गया? तो प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द वेसल, nor does it depend on the area or surface on which it acts. फ्लूइड प्रेशर थोड़ा अलग है सॉलिड से। ठीक, ये हो गया। और लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर पढ़ो, इसमें कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। ये बेसिकली इस फॉर्मूले का कॉन्सिक्वेंस है जो भी तुम पढ़ रहे हो, इसका कॉन्सिक्वेंस। क्या हुआ? लिख लिया सब? ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यही बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ गया तो चैप्टर समझ आ गया।
अब हमको एक दूसरा चीज पढ़ना है, ये समझ आ गया अभी तक जो पढ़ा, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। तो अब देखो, समझो ये 3 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट कितना है h1, यहाँ पे हाइट कितना है p3, h2, दो हाइट, ठीक है। p2 और p3 के लिए हाइट डेप्थ कितना है, हाइट क्या बोलते हैं जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हाइट बोलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं टॉप डाउन तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्थ, ठीक है। डीप और डीप इट इज। नाउ टेल मी, क्या रिलेशन होगा इसमें, प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P2 P3 बड़ा ही होगा P1 से, P2 and P3 will be greater than P1। तो जो प्रेशर डिफरेंस है, देखो P2 minus P1 will it be equal to, greater than or less than P3 minus P1? Equal to. हाँ, Equal to. Because both are in the same depth. since P2 is equal to P3, So P2 minus P1 is equal to P3 minus P1. so pressure difference between any two points in the liquid is going to be same, isn't it? Because it will only depend on the difference in the depth within the liquid, और तो कुछ है ही नहीं, डेंसिटी तो सेम ही लिक्विड है ना, तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर बाहर से एडिशनल प्रेशर लगा, लेट अस से लाइक अ पंप, ये पिस्टन लिया मैंने एंड आई एम एक्सर्टिंग सम फोर्स हियर, और इसका कुछ एरिया होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया विल बिकम प्रेशर हियर, अंडरस्टूड। नाउ आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे सिरिंज होता है तो उसका प्लंजर, मैंने प्रेसिंग दी सिरिंज ऑफ द इंजेक्शन, सो ड्यू टू प्रेशर द इंजेक्शन will be inserted into the veins, ठीक है। तो एडिशनल प्रेशर लगाना पड़ता है ना प्लंज करके, तो प्रेशर ट्रांसमिट कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये जो एडिशनल प्रेशर लगाया है वो इक्वली ऐड होगा हर जगह, हर पॉइंट पे इक्वली ऐड होगा, समझ आई बात। मतलब जो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं इन अ कन्फाइंड लिक्विड, स्टेशनरी लिक्विड, अब ये फ्लोइंग लिक्विड नहीं है लाइक इन रिवर, it is in a vessel, so liquid is not flowing, it is confined, so on a confined or stationary liquid बाहर से जब हम additional pressure लगाएंगे, so that additional pressure will be transmitted equally at all points in the liquid, बात समझ में आई? That additional pressure will have to be transmitted equally at all points in liquid, at all points, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रेशर डिफरेंट अफेक्ट हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे अलग प्रेशर चला जाता तो नाउ P2 minus P1 will not be equal to P3 minus P1, are you with me? क्योंकि अगर अलग अलग प्रेशर ऐड होता तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं होगा, समझ में आया? तो यही है तुम्हारा ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज, ये देखो, एंड दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ,
ठीक है, रीड पास्कल्स लॉ, रीड पास्कल्स लॉ. What is Pascal's law? Read. Pascal's law is a law in which a pressure exerted in a liquid is equally distributed to all the points in it. Undiminished. मतलब as it is. जितना pressure apply किया है, as it is. उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं. That is called Pascal's law. Is that clear? So this is about transmission of pressure. तो pressure हमने लगाया बाहर से, लेकिन वो हर point पे transmit हो गया liquid के अंदर, हर एक point. ठीक है? So next is applications of Pascal's law. It finds so many applications. ठीक है, तो उससे पहले जो हमने P is equal to H rho G था, हर जगह पे हमारा प्रेशर कितना है? H rho G, हर पॉइंट पे इतना प्रेशर है. ठीक है, प्लस ये एडिशनल प्रेशर उसमें ऐड हो गया. लेट्स कॉल दिस एडिशनल प्रेशर एज P डैश. ओके, ठीक है, तो पॉइंट पे जो प्रेशर है inside the fluid is given as H rho G. If you add any other pressure, so at every point the same additional pressure is added. ये तुम्हारा Pascal's law. ठीक? अच्छा. Now read consequences. So these consequences are because of this. Consequences of liquid pressure. P is equal to H rho G. तो उसमें पहला क्या है? Pressure at a certain depth in sea water is more than that at the same depth in river water. क्यों? Sea water और river water में क्या फर्क है? Density. Sea water में density ज्यादा है. Sorry, याद है. मिनरल रिच है. तो सेम डेप्थ पे रिवर वाटर में कम प्रेशर होगा, सी वाटर में ज्यादा होगा. ठीक है ना, ये हो गया कॉन्सिक्वेंस. तो रीजन भी दिया है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ. फिर क्या दिया है नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस में? वॉल ऑफ द डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम. देखो, अब ये डैम है, तो डैम में क्या किया तुमने? वाटर स्टोर किया. तो एज यू आर गोइंग डाउन the pressure is increasing. That is shown by a bigger line. So bottom of the wall पे more pressure is applied. So to withstand more pressure at the bottom, the thickness of the dam wall is more at bottom. Can you see the wall? It is thicker at the bottom. Yes. And at the upper height, it is thin. क्योंकि यहाँ पे pressure कम है. दिख रहा है सबको? तो ये चीज, ठीक है. So dam wall is thicker at the bottom and thinner at the top. क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होते जाता है बॉटम पे से. अगर ऐसे ही बना देते तो वॉल टूट जाता. ठीक, ये हो गया. तो रीजन क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इंक्रीजेस विद इट्स डेप्थ. समझ आ गया? वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई. और ये घरों में क्या होता है? द वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई. लेट अस से this is where the tank is. Because the higher the height of the slope, Depth कितना हो जाता है? the pressure. H बढ़ जाता है ना. So that is why Pressure भी बढ़ जाएगा. pressure बढ़ जाएगा. So bathing experience will be cool. पता चला सोप लगा लिया, पानी नहीं आ. इसलिए तो हम पानी कैसे डालते हैं? ऐसे थोड़ी ना नहाते हैं. ऊपर उठा के डालते हैं पानी हमेशा. अगर बकेट से नहा रहे, नहीं तो शावर भी कहाँ होता है? ऊपर होता है. और शावर का पाइप कहाँ कनेक्टेड है? ओवरहेड टैंक. उतने ऊंचे से जब पानी आ रहा है तो उसका प्रेशर बढ़ गया. डाइवर्स सूट. अब तुम सी डाइवर हो, लेट अस से.
So as you go deep, Yes. the pressure will increase. And what is our body accustomed to? The normal one bar. treatment. One bar, which is also called 1 ATM. 1 ATM is very nearly 1 bar. 1 atmospheric pressure is nearly equal to 1 bar. Nearly equal to 1 bar. Okay. Yes. Or it is exactly 1.01 into 10 raised to 5 pass through. तो ज्यादा फर्क नहीं. 1.01 is almost same as 1 bar. So our body is used to withstanding temperature of 1 bar. But when we go deep in the sea, If the pressure will increase, so we will get crushed. That's why divers wear a suit. Inside the suit, the pressure maintained is 1 atmosphere. 1 atmospheric pressure. ATM. And same is true for astronauts. They have suit inside which pressure maintained is 1 atm. Understood? Because in the space there is less pressure. So our blood veins will rupture. Pura blood will explode. Gone. That's why when you mountaineers, okay, some people at high altitudes they suffer nose bleeding, even in aeroplane. So nose bleeding, आँख से या ear से सब pain होना शुरू हो जाता. ठीक है? तो ये सब होता है. With high altitude, what happens? The atmospheric air column reduces as you go up. तो ये कॉलम कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया. अब बॉडी का जो ब्लड प्रेशर वो बढ़ गया. तो क्या करेगा? प्रेशर जहां ज्यादा होता है वहां से लोअर प्रेशर की तरफ ब्लड निकलेगा, इसलिए सब फाड़ के बाहर आएगा. Scary, isn't it? Not so scary. We've almost completed your pressure wala chapter. Yes. Almost all the concepts are covered. Yes, sir. Actually, we went to the best. Yeah. The better cheap. You get the wine again. Okay. Back then, wait. Yes, very good.